Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear learners, here I welcome you all in your English class. In this class, we will discuss chapter number 15th of your book, and the name of the chapter is Rebecca of the Sunnybrook Farm. Okay, this is the chapter. Let's see what the chapter is all about. Before starting this, let's have a look on this picture. Look at the scene of the city given below. Identify different means of transportations and name it. Can you name it different transportation? Of course, we can name. Some are air transport, some are water transport, some are road transports. In this picture, we can able to identify all these types of transports. Okay, now we will move on the chapter of your book, the story of your book. Okay, from this picture we can see a person is going. Yes, what they are going, maybe वो लोग ये इंसान क्या करता होगा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता होगा, है ना। क्योंकि इस टाइम पे तो हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी है ये या कुछ है इस तरीके का है ना। तो मे बी ये इसी तरीके की स्टोरी हो। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में है क्या ऐसा। Now let's read a story about a girl who is traveling with Mr. Cobb. Mr. Cobb ये इंसान है जो यहाँ पे चला रहा है इसको, इसका नाम है। ठीक है, ये गर्ल और एक मिस्टर कॉब की स्टोरी होगी। देखते हैं इसमें क्या सीखने के लिए और समझने के लिए मिलता है हमको। The old stagecoach was rumbling along the dusty road that ran from Maplewood to Riverboat. ये लोगों को कहां से कहां तक लेके जाता था? दो लोकेशंस बताइए इसमें, एक मेपलवुड से लेके रिवर बोरो तक। ओके, द डे वॉज एज वार्म एज मिड समर्स, बिकॉज यहाँ पे दिन है गर्म बहुत। थ्रो इट वॉज ओनली द मिड ऑफ मे, इट इज ऑलमोस्ट द मिड ऑफ मे, इट इज द मिड ऑफ मे, बट गर्मी इतनी ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा समझ लो जून का एकदम मौसम है, एकदम पीक गर्मी वाला। मिस्टर जेरिफो कॉब, इसका नाम था कॉब, was kind of his horses, yet he never forget that he had to deliver the meal on time. The hills were many and the reins lay loosely in his hand as he rested back in his seats and extended one foot and leg luxuriously over the dashboard. Means इस तरीके से वो पूरा बैठा हुआ था comfortably, है ना। आगे से घोड़े को इस तरीके से चला रहा था और पोजीशनिंग एकदम कंफर्टेबल होके बैठा था, है ना। देयर वॉज वन पैसेंजर, उसकी वी कैन से कार्ट में एक पैसेंजर थी। देयर वॉज वन पैसेंजर इन द कोच, अ स्मॉल डार्क हेयर्ड गर्ल। क्या थी? एक छोटी सी लड़की जिनके डार्क हेयर थे। She was slender and slide from one side to another side on the leather cushion. ऐसा लग रहा था वो कभी इस सीट पे बैठ रही है, कभी उस सीट पे। मे बी शी इज नॉट कंफर्टेबल, तो वो एक सीट से दूसरी सीट में घूमती जा रही थी। Okay, she was slender and slide from one seat to another seat of leather cushion. Whenever the wheels ran further than usual into a rock or jolt suddenly over a stone, she bounded involuntarily into the air, came down again and pushing back her funny little hat. मीन्स क्या हो रहा था जब वो ये चला रहा था, जैसे वो जा रहा था फिर स्पीड में जैसे कोई पत्थर आ गया तो उसकी जो कार थी वो ऐसे ऊपर से ऐसे छलांग मारती थी। तो ये भी ऐसे ऐसा लगता है जैसे ये जो इंसान बैठा है एकदम छलांग मारते तो ऐसे होता है ना, जंप करके फिर नीचे आ जाते थे। उसकी कैप भी ऐसी होती, ऊपर आ जाती थी फिर नीचे आ जाती थी, इस तरीके से, है ना। Mr. Cobb knew nothing of these details. His business was to carrying people to their destination, not necessary to make them comfortable on the way. Means Mr. Cobb का सिर्फ काम था एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाना। ठीक है, उसको ये उससे मतलब नहीं था कि लोग मेरे कार्ट में कंफर्टेबल बैठे हैं नहीं बैठे, उसको था कि एक जगह से दूसरी जगह बस मुझे लोगों को लेके जाना है। दैट्स इट। That morning, when he was about to leave the post office in Maplewood, a woman had come up to him along with the little girl. एक दिन फिर उसको याद आता है कि सुबह सुबह एक वुमन मेरे पास आई थी एक छोटी सी लड़की के साथ, and asked whether he is Mr. Cobb, और मुझसे पूछती है कि आप ही हो मिस्टर कॉब। She pointed to her daughter and said, I want you to take her to my sister Riverboat. वो कहती थी, उस वुमेन ने मुझे कहा कि ये मेरी लड़की है, इसको आपके पास, आप इसको कहाँ पे
वो बोल रही थी कि मेरी सिस्टर रहती है, वो वुमेन कहती मेरी सिस्टर रिवर बोरो में रहती है, आप मेरी डॉटर को उस तक पहुंचा देंगे? डू यू नो Medley and Jane Sawers, they live in a brick house. Well, she's going there and they were expecting her. Will you keep an eye on her, please? Means उस लेडी ने कॉप को क्या कहा था, ये मेरी डॉटर है, इसको आप रिवर बोरो तक छोड़ देंगे और प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखें ना इस पे, है ना, बीच बीच में देखते रहना, मेरी छोटी सी डॉटर है ना। द लिटिल गर्ल नेम इज रिबिका, उस छोटी सी गर्ल जो वुमेन ने छोड़ी थी, जो अभी उसकी कार्ट में बैठी है, जो कभी इधर से उधर वो कंफर्टेबल नहीं है तो इधर से उधर बस पोजीशन चेंज करती जा रही है ना, तो उसका नाम था रिबिका। क्या नाम था? रिबिका। द वुमेन, द मदर had last minute instruction for Rubika as she heard a truck up on the coach. Goodbye Rubika, try not to get into any mischief. उसकी मदर ने लास्ट में यही कहा, ध्यान से जाना बेटा, जो मम्मियाँ कहती है, ध्यान से जाना, संभल के जाना, किसी अनजान से बात मत करना, इस तरीके की चीजें। And sit quietly, so you will look neat and nice when you get there. Don't be any trouble to Mr. Cobb. Mr. Cobb को परेशान नहीं करना, आराम से बैठना, like this. All these things her mother told to Rubika. Goodbye, mother. Don't worry. You know is not as if I have not traveled before. The woman gave a short laugh and said it in extemporary way to Mr. Cobb. She'll stay away from the home overnight. That is not much to be journey proud on. मीन्स वो कहती है मदर से, आप, मैं सब देख लूंगी, आप टेंशन मत करो, मैं आराम से चली जाऊंगी वहां पे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। इट was traveling mother said the child eagerly and willfully, climbing inside the coach as she was speaking. It was leaving the farm and putting up lunch in her basket and a little riding and a little scream car, and we carried out our picture. Means वो कह के अपने कार्ट में आ जाती है बैठने के लिए। Don't tell the whole village about it. If we did, said the mother. मदर कहती है पूरे विलेज को मत बता देना। I know mother, I know, and I would not. All I want to say. बोलती है आप टेंशन मत लो उसकी, है ना। Here Mr. Cobb gave a cluck, slipped the rein, and the horses started steadily on their daily tasks. और फिर फटाफट horses को इस तरीके से करता है और horses चलने लग जाते हैं। All I want to say is that it is a journey when the stagecoach was really under the way. Now the Rubika had to put her head out of the window over the door in order to finish her sentence. Means वो ना पीछे बैठी थी, छोटा सा, उसमें ना क्या था, एकदम छोटी छोटी विंडोज थी, तो वो अपना लास्ट सेंटेंस मम्मी को भी बताने के लिए ना उसको मुंह भी नहीं निकल पाई, इतनी छोटी छोटी बस विंडो थी पीछे बैठने, जहां पे लोग बैठते थे, ठीक है। Here the journey start, अब जर्नी शुरू हो जाती है इसकी। All this had been half an hour, बस आधा ही घंटा हुआ था, and the son of erudite to be done had lulled Mr. the heat, the dust, the thought Cobb's mind, and he had forgotten his promise to keeping an eye on Rubika. Means जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी आधे घंटा चलना शुरू हो जाती है, फिर उसको याद आता है मिस्टर कॉब कि मुझे रूबिका को भी देखना है। Suddenly he heard a small voice above the rattle and rumble of the wheels and the creaking of harness. At first he thought it was a cricket or a tree road or a bird, but having realized that the sound came from the coach, he turned his head over his shoulder and saw a small shape hanging as far as the window as safely would allow. Means वो उसको फिर याद आता है रूबिका को मुझे देखना है। फिर उसी टाइम उसको एक पीछे से आवाज सुनाई देती है, वो पीछे टर्न करके देखता है तो वो रूबिका थी जो छोटे से छेद में से, छोटे से विंडोज में से उसको कुछ कहना चाहती थी। देखते क्या कहना चाहती है। A long black beard of hair swams with the motion of the coach. The child held his hat in one hand, with other hand ineffectual attempts to stab the driver with the microscopic sunshades. Please let me speak, she called. वो कहती है मुझे बोलने दो। Mr. Cobb drew up the horse obediently.
Does it any cost more to ride with you? मीन्स रूबिका कहती है अगर मुझे आपके साथ बैठ के राइड करना है तो उससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे. Hair so slippery and shining down here, and the coach is so much. It is slippery and shiny down here, and the coach is so much too big for me that I rattle around in it till I am black and blue. मीन्स वो कहता है कि ये कोच यहाँ पे क्या है, आप ठीक से बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो, पीछे बैठो आराम से बैठो, यहाँ पे तो कंफर्टेबल नहीं होगे. एंड फिर वो बोलती है एंड द विंडोज आर सो स्मॉल. वो कहती है मैं जहाँ पीछे बैठी हूँ ना, एक तो वहां पे कुशंस और ये जो आपने बैठने का लगाया इसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, और ये विंडोज इतनी स्मॉल है, and the windows are so small I can see only pieces of the things I have most broken my neck stretching around to find out whether my trunk has fallen off the back. It's my mother's trunk. Means वो बोलती है मुझे विंडो से भी कुछ ठीक से नहीं दिख रहा क्योंकि छोटी छोटी विंडो थी उसमें, तो है ना. मिस्टर कॉप वेटेड for her to stop and then said pleasantly, you can come up if you want to. There's are not no extra charges to sit with me. He helped her out, boosted her up the front seats and resumed her own pace. मीन्स मिस्टर कॉब ने कहा बेटा अगर आपको आगे आके बैठना है इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, आप आ जाइए, मेरे साथ बैठना चाहते हो तो आप बैठ सकते हैं. तो उसको हाथ पकड़ के उसको अपने साथ बिठा लेता है. Rebecca sat down carefully, smoothing her dress under her, pushing back on his head, pulled up his damn white cotton gloves, पूरा कैप वैप क्लोथ्स और आराम से बैठ जाती है वो. एंड स्पोक डिलाइटली, ओह दिस इज बेटर, दिस इज लाइक ट्रैवलिंग. अब लग रहा है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना. आई एम रियल पैसेंजर नाउ, अब मैं रियल पैसेंजर लग रही हूँ. एंड डाउन देयर आई फेल्ट लाइक आवर सिटिंग हियर and when we shut her up in a, ऐसा लग रहा था पहले तो मैं ट्रैवलिंग ही नहीं कर रही थी, पहले लगा मुझे किसी ने पिंजरे में बांध दिया, अब लग रहा है मुझे यहाँ पे इतना मजा आ रहा है आगे बैठ के. आई होप यू हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे अगो. ये थी आपकी पूरी स्टोरी. स्टोरी में जस्ट यही था कि रूबिका को मिस्टर कॉप ने आगे बैठने के लिए बोल दिया और किस तरीके से उसकी जर्नी अब हैप्पी 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 होती है. क्लियर? सो ये था आपका चैप्टर. होप सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. Yes, so yeah, this is all about this class. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.